वो एक्चुअल साइज है एरे का, और जो दूसरा साइज, जो दूसरा एरे है आपके पास, आपको उसके एलिमेंट्स, वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ टू पॉइंटर्स एल्गोरिथम. Hello everyone, so welcome back, and today we are going to solve another very famous problem of two pointers algorithm. And the name of the question is like we have to basically merge two shorted arrays into a single array. That means let's try to understand the question. You will be given two shorted arrays. आपके पास दो shorted arrays होंगी और आपको उन दोनों को merge करना है. But the twist is कि जो आपका पहले वाला एरे है उसका साइज विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द एरे. उसका साइज जो है वो एक्चुअल साइज है एरे का, और जो दूसरा साइज, जो दूसरा एरे है आपके पास, आपको उसके एलिमेंट्स इस वाले एरे में इन प्लेस में आपको फिट करना है. Sounds cool? Let's jump to the question, see what exactly it is trying to say and how can we solve this question. So if you see on my screen, I have one array that is 1, 2, 3, and I have three zeros with me. That is A, and the second array I have is 2, 5, 6. Cool. Now we have this, then the size of the zeros will be equal to the length of this array, same size. So instead, the twist is, instead of creating a new array, you have to make the changes in memory in place, so that you'll get this array as a resultant array. And if you see this example, it will be like 1, 2, 2, 3, 5, 6. So that's the output. Okay, so now how can we solve this? Keeping in mind, you don't have to use extra memory. Else, like if you go that way, आपने क्या किया, आपने simply एक नया array create किया and you just do a simple two pointers approach. आपने दो pointers का approach use किया and then you just put it on all the elements in the array, 1, 2, 2, 3, 5, 6, and you return this array. So in this case, we are using an extra memory, that is OOFN. Actually it will be like n plus m, considering size of these two. Okay, so that is what we don't have to do. हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें इसको इस वाले एरे को ही मॉडिफाई करना है. And now how can we do this? Okay, so let's see. So what will be the brute force way? Like I just discussed this case with you कि आपके पास क्या है, आपके पास दो एरे दी हुई है. Let's say पहले एरे है आपके पास 1, 2, 3, 0, 0, another 0. आपके पास एक और एरे है 2, 5, 6. आपने क्या किया, what you did, आपने क्या किया, एक पॉइंटर रखा यहाँ, let's say P1. आपने एक पॉइंटर रखा यहाँ, let's say P2. Cool. क्या करोगे आप, सिंपली आपने एक n प्लस m का, लेट्स से इसका लेंथ m है, इसका n है, आपने इस साइज का एरे क्रिएट किया, दैट इज m प्लस n. नाउ आपने क्या किया, आपने सिंपल चेक किया, you put a condition whether this one is smaller than 2 or not. If yes, then place this and move the pointer. Cool. 2 is less than equal to 2, you can place 2, move the pointer. Is 3 less than equals to 2? No. Move, place P2. That means you will place this pointer and move this one. Now, is 3 less than 5? Yes, you can place 3, move this pointer. Yeah, so that's the traditional way, as we are and with our elements, considering this was the only array and we were just merging two shorted arrays into a single one. So this will be the possible case. And in this case, if we discuss our time complexity, what's going to be simple, m plus n, makes sense. And the space complexity is again m plus n, because we are using extra memory.
Now comes the question. Now comes the question. Can we using using from the question we have few more elements that is equal to the size of this B array. Can we somehow modify this array in place so that we get our output into a single array without using any extra memory? Is this possible? Can we do this? Yes, we can, and let's see how. Now, coming back to the example, we have 1, 2, 3, 0, 0, 0. We have 2, 5, 6. Now, what I'm going to do is, we know I'll be using two pointers approach. Why? Because keeping in mind that my these arrays are sorted, so that means I have something to compare and it will give something relevant to me. That means हमारे पास जो array है वो sorted है और हमें जो हम जब इस पर traversing करेंगे, so we have a हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन चूज कर सकते हैं whether to increase this pointer or that pointer. So considering this, what I'm going to do, I'll place my first pointer here. Fine. How? Let's say the size of this array is m. Okay, let's say the size of this array is n. Okay, so if I do m minus n, will I be able to point this element? Make sense? इसका साइज क्या है? 3. इसका साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6. 6 minus 3, that is 3. Oh sorry, you have to use like m minus n minus 1 because 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है. तो आप बेसिकली आ जाएंगे पॉइंट 2 पे. तो हमने अपने p1 को कहाँ प्लेस किया? सिंपली m माइनस n माइनस 1 पे, दैट इज 2. हमारा यहाँ पे एक पॉइंटर आ गया. ओके, तो वी हमारा इंट्यूटिव क्या है कि हम इसको पीछे से ही शॉर्टेड लेते हुए चलेंगे इंस्टेड कि हम इसको आगे से आगे से फ्रंट से लीड करें. वी विल मेक श्योर कि हम इसको बैक एंड से ही पीछे से ही हम इसको शॉर्टेड करते हुए लेके चल रहे हैं. नाउ सो सिमिलरली आई विल प्लेस माय p2 हियर. मेक सेंस? Now makes sense. Now I'm going to use one more variable with this. Let's say I name this as index. So this will tell me whether my correct position is fitted or not. So now the question is, where am I going to place this index? इस index को मैं place कहाँ करूँगा? So I'm going to place this index at this position. So we can say m plus n minus 1. Cool. Or we can simply say इसका size m है. We can say no, it will be m minus 1. Sorry, it will be m minus 1. That is 5, fifth position. 0 1 2 3 4 5. So far what we have done, हमारे पास एक हमने दो पॉइंटर्स लिए. एक को हमने फर्स्ट एरे के उस पोजीशन पे रखा जहां से जीरोस स्टार्ट होने वाले थे, उससे जस्ट पहले. दैट मींस एट दिस पोजीशन. ठीक है, हमने p2 लिया, हमने उस p2 को अपने दूसरे वाले एरे के लास्ट में पॉइंट आउट रखा. That means at this position, and we took one more variable. हमने एक और वेरिएबल लिया, हमने उसको फर्स्ट एरे के लास्ट में रखा टू मेक श्योर कि वो इंडेक्स पे डेटा जो है वो करेक्टली फिल हुआ है या नहीं. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू आइटरेट दिस? सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड द इंट्यूशन. इसके पीछे इंट्यूशन क्या है? p2 ये मेक श्योर करता है कि हमारा इस एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है बिकॉज द एरे इज शॉर्टेड. तो 6 इस वाले एरे में सबसे बड़ा है, दिस एरे में सबसे बड़ा 6 है. फुल. इस एरे में सबसे बड़ा 3 है. राइट? दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक तो इस पोजीशन पर आएगा. मेक सेंस? अगर इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है बिकॉज बोथ एरेज आर शॉर्टेड, तो इनमें से कोई एक तो इस पोजीशन पर आएगा. मेक सेंस? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुट अ सिंपल चेक. If a of p1 is greater than
b of p2। क्यों किया मैंने ये? क्या ये इससे बड़ा है? तो क्या करो, और अगर नहीं है तो क्या करो? कूल। सो लेट्स से considering our case is 3 greater than 6? No, नहीं है। तो क्या करना चाहिए? what should we do what should we do? Simply आप इस a के इंडेक्स पे b का p2 रख दो। डन डन। बिकॉज हमने क्या फाइंड आउट किया, हमारे पास 3 है और 6 है, इनमें से कोई एक तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जो कि इस प्लेस पे पोजीशन होगा। तो हमने चेक किया कि क्या 3 छोटा है 6 से? नहीं है। सॉरी, क्या 3 बड़ा है 6 से? नहीं है। दैट मीन्स 6 इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन द एरे। दैट मीन्स 6 इस पोजीशन पर आएगा। करेक्ट। हमने 6 को इस पोजीशन में प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव टू डू, व्हाट डू वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट डू इंडेक्स माइनस माइनस, सो दैट अब हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। सिमिलरली इफ दैट्स द केस, अगर ऐसा केस बनता है, लेट्स से नाउ वी हैव टू डिक्रीमेंट दिस पॉइंटर एज वेल। अब हमारा p2 यहाँ नहीं, हमारा p2 यहाँ आ जाएगा, that is pointing to 5. Why? Because we have already placed 6, so it doesn't make sense to iterate over other element. So यहाँ तक clear है? Now let's do a dry run. Let's do a dry run to see how things are actually working in the background. So let me complete the code. What will be the code for this part? Simple. आपको इस इंडेक्स पे a of p1 प्लेस करना है, and now p1 minus minus, and again index minus. That is done, guys. This is the only thing we have to do. This is the pseudo code we have to do. Now let's see how it's actually working. So I'm going to do a dry run and let me know if we missed anything. Okay, so my pointer is here, my index is here, p1 is here, and p2 is here. Okay, so I'm going to create diagram at each time. So is my p1 greater than p2? Is my p1 greater than p2? No. That means we have to place this 6 at the index position. So what will it become? The next iteration it will become 1 2 3 0 0 6. Now my index is here, my p1 is here, and now my p2 is at 5. Next iteration, again, is p1 3 greater than 5? No. Again, what we have to do? We have to simply place it in the first array, 3 0 5 6. Now my index is at this position, my p1 is here, and again in this array my p2 is here. Now again, is my p1 3 greater than 2? Yes it is. Yes it is. Now we got the case that in my first element is greater than my greater than 2. So what I'm going to do is simply place this into the first one. So I'm going to place 3 over here, because that what was our code. So now in the next iteration it will become 1 2 3 3 5 6. Now my index will go beyond minus minus, then my index at this position, and now p1 will also decrease because we just placed it. So my p1 will come at this position, and again in this array nothing will change. So now my p2 is this position. Now is my 2 greater than 2? No. I'm going to place this one again here. So what it will become? Simple. 1 2 2 3 5 6, and this will remain same. And now we got p1 is here, index is here, and p2 is here. Now we do the same. Is p1 greater than p2? No. Now we need to place this 2 over here. So this time it will become
1, 2, 2, 3, 5, 6. And now we can say this array we have already completed it. Now our P1 will be at this position and our index will be at this position as well. Now if we see the array, it's shorted. It has been shorted. So that's how we can solve with the help of two pointers. But we are missing a very critical edge case. We are missing a very critical edge case. Let's consider an example. In the above code that I have written, in this code, what will be our while condition? We can simply say that while p1 greater than equal to 0 and p2 greater than equal to 0. Make sense? So we are making sure कि हमारा p1 0 से बराबर हो या 0 से बड़ा हो. सेम विथ p2. बट एक एज केस है. वो एज केस क्या है? लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. नाउ इन दिस केस आप ये चेक करेंगे हमारा p1 यहाँ है, इंडेक्स यहाँ है और p2 यहाँ है. इज p1 ग्रेटर देन p2? यस, हमने 6 को यहाँ प्लेस किया. ठीक है, p1 यहाँ आ गया. इज 5 ग्रेटर देन 3? यस, हमने 5 को यहाँ प्लेस किया, p1 यहाँ आ गया. इज 4 ग्रेटर देन 3? यस, हमने 4 को यहाँ प्लेस किया एंड p1 खत्म हो गया. So the our loop terminated, but these elements didn't get placed. ये element अभी place ही नहीं हुए. So we have to make sure कि ये element भी correctly place हो जाए array में. We have to do nothing, just simple short code. While p2 greater than equals to 0, we have to do nothing बस a of index minus minus में आपको b of p2 minus minus place करना है and that's it. So what will be the time complexity? Simple. We are just doing one iteration, making sure that in some cases we might covering p2 as well. So at worst, the tc will be order of m plus n. And what about space? We are not using any extra space from our own. हमने कोई भी extra space use नहीं किया है, so we can say it will be o of 1. So that's it. That's the question. Thank you guys.